So this fifth episode is about bodies, commissions and other offices. स्टैट्यूटरी बॉडी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, उसके ऊपर भर भर के क्वेश्चंस आए हुए हैं. सो इन दिस एपिसोड ऑफ ट्रेस वी विल बी लर्निंग ऑल दोज PYQs फ्रॉम द पास्ट 15 years. सो CAG के ऊपर 1, अटॉर्नी जनरल 2 क्वेश्चंस, फाइनेंस कमीशन 4 क्वेश्चंस, इलेक्शन कमीशन के ऊपर सिर्फ 1, डिलिमिटेशन कमीशन 2, लोकपाल only 1 and planning related and others 9 questions. Out of these, planning related bodies के ऊपर questions are 3 and others 6. In total 9. तो total हो गए nearly 20 PYQs from prelims. And why I am doing all this is that the purpose of this trace is that you should learn how to analyze the PYQs. बिकॉज मैक्सिमम केसेस में क्या है, PYQs एनालिसिस मतलब आपको लगता है दैट यू जस्ट गेट अ बुक एंड यू स्टार्ट रीडिंग इट, स्टार्ट सॉल्विंग द PYQs, बट नो, इट इज नॉट. माय पर्पस हियर इज दैट आई विल मेक यू लर्न how to analyze the PYQs, and based on those learnings you should figure it out that what could be the future prospects उन particular favorite topics of UPSC, उन topics पे what could be the questions, different types of questions that can be framed in future. And if you are doing all this, then you are actually preparing seriously for your prelims. So this is the first question that was related to CAG. CAG के ऊपर एक ही क्वेश्चन आया and that appeared in 2012. कॉमनवेल्थ गेम्स का वो वाला इश्यूज टाइम चल रहा था, so that's why like you can also say that it was related to current affairs, inspired from current affairs. This question is like giving some lengthy statements. बट सारा लेंदी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद इफ यू विल फिगर इट आउट देन यू विल अंडरस्टैंड कि इट इज एक्चुअली टेस्टिंग बेसिक अवेयरनेस. बेसिक अवेयरनेस अबाउट बेसिक अवेयरनेस वेदर यू अंडरस्टैंड द लिमिट्स ऑफ CAG's अथॉरिटी, वेदर यू नो इट्स ऑडिट फंक्शंस, वेदर यू नो इट्स एनफोर्समेंट पावर्स. सो इस टाइप के बेसिक लेवल पे आपको लेंदी क्वेश्चन लेंदी स्टेटमेंट दे दिया गया एंड द टेस्ट इज वेरी बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग. एंड क्वेश्चन ऑल्सो अपीयर्ड 13 years ago. In future, question can come like whether you can distinguish the audit and enforcement powers of CAG or not, and what could be like judicial and quasi-judicial powers of CAG. This way, you should be preparing for future. Attorney General 2 questions appeared. First one appeared in 2013. आपको 4 चीजें दे दी गई और पूछा गया कि इनमें से which of the following are like correct with respect to Attorney General. अब यहाँ पे speak and vote. So why UPSC is giving like two similarly sounding stuffs in the one particular question? Because it is actually wants to test you whether you can differentiate between participation and voting. इन दोनों के बीच आप differentiate कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, that is what UPSC is actually testing. And what is the constitutional position of Attorney General? वो तो चलिए possibility है ही, वो तो simple सा intent है ही. In a future question can come regarding comparing Attorney General and Solicitor General, है कि नहीं. अब AG के बारे में क्वेश्चन आ गया. In future chances are there that question can come about Solicitor General as well. So this type of things you should be preparing. Also very important, who can speak but not vote? What are the different kinds of functionaries जो वोट तो कर सकते हैं, जो स्पीक कर सकते, they can speak in the parliament और लोकसभा but they cannot vote. अब ऐसे कितने फंक्शनरीज हैं? क्या आपको इन फंक्शनरीज के बारे में पता था? अगर नहीं तो आप पता कर लीजिए, बिकॉज दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. आपको कंफ्यूजिंग से स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे रिगार्डिंग स्पीक एंड वोट, बिकॉज दैट थिंग हैज अपीयर्ड ओवर हियर, और उन कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स को ऊपर देखने के बाद आप फिर से सर पकड़ के बैठ जाओगे. 2022 क्वेश्चन कम्स अटॉर्नी जनरल, और देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो गया सॉलिसिटर जनरल. So first question appeared in 2013. If someone had analyzed that 2013 का question, then he or she should have understood कि okay, AG के ऊपर आया, future में SG के ऊपर भी question आ सकता है, and that is what is asking. अब उसमें क्या है, इनके like participate कर सकते हैं meetings of parliament, the same thing again repeated, and then regarding resignation or removal. So what is the test? Test here is like constitutional position क्या है लॉ ऑफिसर्स का. लॉ ऑफिसर्स becomes a important topic, और इस constitutional position में you should be learning about like powers. पावर को लेकर के आपको पता होना चाहिए what is the power, what is the like resignation, removal, appointment,
these become important for you in future. Comparing questions which like statements asking giving comparison basis type पे, like attorney general, solicitor general, फ्यूचर में एडवोकेट जनरल भी आ सकता है. Based on this analysis, advocate general also becomes important now. What do you think? And also like trick statement type questions like who holds office during pleasure of president and who resigns with the government. ऐसे कौन कौन सी फंक्शनरीज हैं जिनका रेजिग्नेशन होता है with when the like government अगर खत्म हो जाए तो this type of questions can come. Then we will come to finance commission. Finance commission पे 4 questions have appeared. The first one in 2011. और ये क्वेश्चन था बहुत सिंपल सा. क्या बेसिक फंक्शंस है, वेदर यू नो द पावर, वेदर यू नो द बेसिक फंक्शंस, ये चीज आपको पता है कि नहीं. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन वाज एक्चुअली टेस्टिंग. सो लाइक वेदर यू कैन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल रोल विद अदर ऑब्जेक्टिव्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स. अब यहाँ क्या डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस दे दिए गए, बट नन ऑफ दीज आर रिलेटेड टू फाइनेंस कमीशन. सो question is, intent of the question is whether you can separate constitutional role of finance commission with other administrative or economic objectives. आप separate कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, what the finance commission does, what it does not do. इस type of questions confusing आ सकते हैं. Above all, what is very important is like in for future articles, composition, recommendations of particular finance commissions are very important. 2012, this time question came specifically with respect to recommendations of 13th Finance Commission. So 13th Finance Commission, a specific finance commission regarding questions started to be coming from 2012. और क्या है उसके बेसिक रिकमेंडेशंस दे दिएगा और पूछा जा रहा है बता दो इसमें से कौन सा जो रिकमेंडेशन है 13th एफसी का है. So like linking a specific finance commission with their recommendations. This is what is the learning curve for you. You should understand. Okay, this is the intent of UPSC and this type of questions can appear in future. 13th आया, हो सकता है आगे 14th आ जाए, 15th आ जाए और अब 16th भी आ जाए. So like finance commission specific questions can come. कौन सा फाइनेंस कमीशन ने क्या काम करा, कोई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, कोई इंपॉर्टेंट इनोवेशन, और कंपेयर करने वाले क्वेश्चंस कैन आल्सो कम इन विच इंपॉर्टेंट मेजर और रीसेंट इफ फाइनेंस कमीशन के मेजर रिकमेंडेशंस दिए जाए और बताया पूछा जाए बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है. So these are the prospects. So these are like you can say a brief on what this book is all about. इसमें आपको learning curve तो मिलेगा. Learning curve means and on the basis of analyzing the PYQs, what you should learn, what you should work on, and उसके बाद आंसर और एक्सप्लेनेशन तो मिलेगा ही. ऑल दीज आंसर्स आर बेस्ड ऑन ऑफिशियल आंसर कीज, वो तो मिलेगा ही. एंड अबव ऑल यू विल गेटिंग द प्रोस्पेक्ट्स कि उस पर्टिकुलर टॉपिक पे व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड इन फ्यूचर, एंड देन MCQs as well. All these features are available in the book, and if you want to learn all these everything, you can buy the book. 2015 again question came, this time 14th फाइनेंस कमीशन और उसके रिकमेंडेशंस. तो सेम थिंग रिपीट हो रही है ना. तो 13th 14th 15th फाइनेंस कमीशन रिगार्डिंग जो डिस्टिंक्टिव रिकमेंडेशंस हैं दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर यू. Then in 2025 last year question came about 15th फाइनेंस कमीशन. तो हमने देखा 13th 14th 15th सबके बारे में क्वेश्चन आ चुका है. एंड दिस क्वेश्चन ऑफ 15th वाज क्वाइट यू कैन से थोड़ा निटी-ग्रिटीज में गया है, कोर फैक्ट्स से दिए गए. अब ये वाला फैक्ट अगर आप देखोगे तो आसानी से स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. इफ यू आर हैविंग द बेसिक अवेयरनेस अबाउट द रिकमेंडेशंस, वो चीज अगर आपको बेसिक लेवल पे पता है देन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन. बट स्टिल आपको यू शुड अंडरस्टैंड दैट ओके दिस टाइप ऑफ कोर फैक्ट्स आर आल्सो बीइंग आस्क्ड. सो इन फ्यूचर इफ लाइक क्वेश्चन कम्स लाइक कंपेयरिंग दीज फाइनेंस कमीशंस, अब 16th के ऊपर भी अगर क्वेश्चन आ जाए क्या कंपोजिशन है, हु इज द चेयरमैन, रेलेवेंट आर्टिकल्स, रेलेवेंट रिकमेंडेशंस, तो आपको जितने भी रिसेंट वाले फाइनेंस कमीशंस हैं दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली. बट इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ लिटिल बिट मोर देन ऐसे फाइनेंस कमीशन स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन विच हैव लाइक केम अप विथ सम इनोवेटिव टर्म्स. फॉर एग्जाम्पल टैक्स एफर्ट, फिजिकल डिसिप्लिन, इंसेंटिव मैकेनिज्म्स. क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर फाइनेंस कमीशन है विच केम अप विद सर्टेन स्पेसिफिक टर्म्स, सर्टेन स्पेसिफिक इनोवेटिव in innovations? So those finance commissions also become important. Then election commission.
this always remains in news, but till now only one question, till now matlab in past 15 years only one question came from election commission. क्या है भाई, 5 member body है कि नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है दैट डिसाइड्स इलेक्शन शेड्यूल, और इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स स्प्लिट्स एंड मर्जर रिलेटेड इश्यूज एज वेल. अब ये सेकंड स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो जाएगा इफ यू लाइक हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग इलेक्शंस. तो उस बेसिस पे दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड बेस्ड ऑन एलिमिनेशन. बट क्वेश्चन इजी था. Still, what is the learning curve for you? That you should be aware of the composition, the functions, and the powers of election commission. Future में appointment, tenure, and power of election commission with respect to party recognition, mergers, dispute resolution. These become very important topics. और अभी election भी खत्म हुआ है, so obviously you should be preparing for these. Answers, explanation आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके देख सकते हैं. 2012 डिलिमिटेशन कमीशन. अब तक 2 क्वेश्चन आए हैं डिलिमिटेशन कमीशन पे. 2012 क्वेश्चन अपीयर्ड. इसके ऑर्डर्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट. इसके ऑर्डर्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय असेंबलीज और लोकसभा. So, like, what is the unique legal status and power of delimitation commission? That is the learning curve for you. You should understand कि okay, delimitation commission, और ये न्यूज है फिर से है पिछले कुछ महीनों से, इट इज इन न्यूज. सो व्हाट इज द लीगल स्टेटस एंड पावर. एंड आपको कंफ्यूज करने के लिए ना कंपैरिजन बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है. जितने भी है ना डिलिमिटेशन कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, 3-4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा, लेंदी स्टेटमेंट, जो दैट विल टेस्ट वेदर यू नो, वेदर यू हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग और नॉट. So procedure and finality of delimitation orders, this is something very important, और फ्यूचर में इसके ऊपर क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड. 2024, वेरी रिसेंटली, 1 year 2 years ago, कितने डिलिमिटेशन कमीशन हुए हैं, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. फैक्चुअल क्वेश्चन था. तो पर्पस यहाँ पे क्या है, हिस्ट्री ऑफ डिलिमिटेशन. अगर डिलिमिटेशन कमीशन बहुत ज्यादा होते, 100 होते, 50 होते, देन दिस क्वेश्चन कुड नॉट हैव फिट. बट चूंकि सिर्फ 4 ही हैं, तो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. अब 4 ही हैं तो आपको उनके ईयर याद होने चाहिए. दैट ऑब्वियसली बिकम्स इंपॉर्टेंट इन फ्यूचर. क्वेश्चन रिगार्डिंग हिस्ट्री, क्वेश्चन रिगार्डिंग क्रोनोलॉजी, क्वेश्चन रिगार्डिंग मेजर रिकमेंडेशंस, कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. मेन पावर क्या है, आर देयर एनी डिलिमिटेशन कमीशंस व्हिच वर एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर रीजन ऑफ इंडिया, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. हो सकता है फ्यूचर में फ्रीज पीरियड को लेकर के क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज इफ यू आर लाइक स्टडिंग पॉलिटी तो पता होगा 2026 जो है नंबर ऑफ सीट्स जो है दैट हैव बीन फ्रीज्ड टिल 2026, और अभी साल भी चल रहा है 2026. सो डोंट यू थिंक दैट दिस बिकम्स सुपर इंपॉर्टेंट. 2026 चल रहा है, 2026 तक फ्रीज हो रखा है सारा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का सिस्टम. Delimitation commission basis पे question can be framed. So this type of things na have been covered in this book, and this book is very unique. Nowhere you will be getting such books where like there will be analysis, there will be explanation, there will be answer, there will be future prospects, and there will be MCQs as well. So this book is going to be a savior for your prelims, and you can easily buy this book. So 2025 Lokpal. Only one question appeared in Lokpal till now in past 15 years. और लोकपाल के ऊपर एक ही क्वेश्चन. लोकपाल मतलब आ तो गया था 2013 में, बट लोकपाल के ऊपर क्वेश्चन आया पहली बार 2025 में. क्या क्वेश्चन है, इसका पावर विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पब्लिक सर्वेंट्स पोस्टेड आउटसाइड इंडिया. चेयरपर्सन कौन हो सकता, चेयरपर्सन की एज क्या है, एंड प्राइम मिनिस्टर को लेकर की अथॉरिटी क्या है. सो व्हाट इज द टेस्ट. टेस्ट इज लाइक बेसिक नॉलेज about the Lokpal Act, its jurisdiction, its eligibility, its powers. These are the basic things that have been tested in this question. अब eligibility, jurisdiction, power of Lokpal हो सकता है फ्यूचर में लोकायुक्त के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, quite possible. Then planning related questions. First one is like appeared in 2013. National Development Council is an organ of Planning Commission. Planning Commission तो खत्म हो गया, but it was not an organ. Then Economic and Social Planning kept in the concurrent list. तो subject specific information भी आपसे पूछा जा रहा है. And पंचायत्स and उनका power regarding preparation of plans, economic justice, social justice,
इसके ऊपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, इसके ऊपर क्वेश्चन आया. सो व्हाट इज क्वेश्चंस रिगार्डिंग व्हाट द क्वेश्चन इज एक्सपेक्टिंग यू टू नो? बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लानिंग, फेडरल स्ट्रक्चर, रोल ऑफ पंचायत राज इन फ्यूचर, पंचायती राज एंड प्लानिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इसको कनेक्ट करते हुए क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. देन कंपेयरिंग रोल्स, एडवाइजरी बॉडीज वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इंस्टीट्यूशंस, इनके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं. लिस्ट अलोकेशन, अब प्लानिंग के ऊपर कौन सी लिस्ट में प्लानिंग मेंशन है, स्टेट या यूनियन गवर्नमेंट का क्या पावर है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड. 2013 नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, अब इसका क्या स्टेटस है, इसके मेंबर कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग थे, आई मीन 2013 में क्वेश्चन है. तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? कंपोजिशन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्लानिंग बॉडीज. अब हो सकता है नीति आयोग रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज अब तो नीति आयोग है, प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया. तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, नीति आयोग का सीईओ कौन है, डेप्यूटी सीईओ कौन होता है, नॉट कौन है, कौन होता है, हु अमंग लाइक प्राइम मिनिस्टर होता है, इकोनॉमिस्ट होते हैं, इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इज इट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज अ एग्जीक्यूटिव बॉडी, इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. हु इज इंक्लूडेड एंड हु इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम हाई लेवल एडवाइजरी काउंसिल्स, दैट कैन बी अ फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. 2014 question comes regarding which of the following are associated with planning in India. आपको 5 बॉडीज के नाम दे दिए गए, 5 अथॉरिटीज, 5 ऑफिसेस का नाम दे दिए गए और पूछा जा रहा है कि बता दो इनमें से प्लानिंग से एसोसिएटेड कौन सा है. सो लाइक वेदर यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन बॉडीज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्लानिंग वर्सेस those having administrative roles. Can you differentiate? This is what is the intent of this question, and UPSC is expecting that you should be knowing this type of question, this type of themes. So direct versus indirect role in planning, or mixing executive, parliament and advisory body, different kinds of bodies, उनको मिक्स कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सी एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कौन सी लेजिस्लेटिव बॉडी है, कौन सी सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, पावर्स, कंपोजिशन, इनके ऊपर क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड. नाउ आई विल कम टू अदर्स. अब इस अदर्स में अलग डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडीज जो इंटेंट इज लाइक कि ये बॉडीज का सोर्स क्या है, वेदर दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन 2012. सो एक्ट आया 2010 में. सो मोर और लेस इट इज ऑल्सो रिलेटेड, इंस्पायर्ड फ्रॉम करंट इवेंट्स. अब इसको, this question could have been kept in environment, but there is a reason why we have kept it in the polity, because it is asking कि NGT जो है that act enacted in consonance with which of the provisions of the constitution. तो कॉन्स्टिट्यूशन से कहां से इंस्पायर होकर के वो एक्ट आया, that is what the question is asking. So constitutional basis of environmental justice, that is the intent, that is the learning curve for you. You should figure it out by analyzing PYQ कि ओके यूपीएससी ये जानना चाह रहा है फ्यूचर में आप हेल्थ, एजुकेशन, उससे रिलेटेड अगर कोई बॉडीज है तो whether they are having some sort of connection with the some any constitutional provisions, that can be asked. या एनजीटी के ऊपर ही जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स with respect to statutes like NGT Act, या which articles provide constitutional backing for specialized tribunals, that becomes very important. है कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कि भाई कौन सा आर्टिकल है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग दे रहा है सर्टेन काइंड ऑफ ट्रिब्यूनल्स को या सर्टेन काइंड ऑफ बॉडीज को या फंक्शनरीज को या अथॉरिटीज को, दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट. कौन से जो है डज नॉट और डू नॉट फाइंड मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा मेंशन है, कौन सा मेंशन नहीं है. मतलब सिंपल सा पूछा जा रहा है आपसे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आइडेंटिफाई करो, एंड दिस अपीयर्ड इन 2013. सो लाइक वेदर यू नो लाइक डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडीज, और इसमें आप देखेंगे ना तो जो सारी बॉडीज है ना मोर और लेस लाइक ये दोनों रिलेटेड टू प्लानिंग थे और एक जोनल काउंसिल था. सो ये भी एक टेस्ट हो रहा था, लाइक प्लानिंग एंड एडवाइजरी बॉडीज रिलेटेड भी ये टेस्ट किया जा रहा था. बट मोर इंपॉर्टेंट कि फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, आपको मिक्स कर दिया जाएगा एनडीसी, नीति आयोग
एंड जोनल काउंसिल्स, और उसके ऊपर आपको कंफ्यूजिंग से स्टेटमेंट देकर के टेस्ट किए जाएंगे। कौन सी बॉडी रिप्लेस हुई है? तो एक्चुअली इन 2016 क्वेश्चन अपीयर्ड ऑन दिस कि नीति आयोग ने रिप्लेस करा प्लानिंग कमीशन को, बट इन फ्यूचर मोर क्वेश्चंस लाइक दिस ऑन डिफरेंट बॉडीज, और वो स्टैट्यूटरी है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, एग्जीक्यूटिव है, और अगर है तो उसका सोर्स क्या है, कौन सा एक्ट, कौन सा आर्टिकल है ना, कौन सा एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, अगर एग्जीक्यूटिव बॉडी है तो कौन सा एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस बिकम इंपॉर्टेंट, एंड ऑल दीज थीम्स, ऑल दीज आइडियाज हैव बीन कवर्ड इन द बुक। 2018 एफएसएसआई से, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले हमने देखा था ना व्हेन वी वर डिस्कसिंग एनजीटी रिलेटेड क्वेश्चन, तो एनवायरमेंटल जस्टिस, अब हेल्थ एंड फूड रिलेटेड एक बॉडी है भाई, स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो वो जो बॉडी है हेल्थ रिलेटेड बॉडी, उसका सोर्स पावर क्या है, एंड वेदर लाइक उसको हेड कौन करता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, और कौन सी मिनिस्ट्री में है, इस टाइप ऑफ की बेसिक अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जा रही है। तो फ्यूचर में हो सकता है आपसे एजुकेशन रिलेटेड ऐसी कोई बॉडी हो जो करंट अफेयर्स में भी रही हो, और ऐसी कोई बॉडी जो उसको कौन हेड करता है, कौन सी मिनिस्ट्री में, व्हाट आर इट्स कंपोजिशन, हु अपॉइंट्स, हु रिमूव्स, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। तो फूड सेफ्टी रेगुलेशन पे ये क्वेश्चन था। इन फ्यूचर regulating the education sector, health sector, or insurance sector, or what else, telecom sector. Don't you think that these sectors also become important for you, for your future prelims? और ये सारे sectors, ये सारे जो regulatory bodies होंगे, उनका statutory कौन से act से है, what are its basic powers, what are like who appoints, who removes, these type of things become very important. तो एंड ऑल्सो मिनिस्ट्रीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज और उसके पेरेंट मिनिस्ट्रीज, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मेन बॉडीज के ना पेरेंट मिनिस्ट्रीज पता होने चाहिए। अब एफएसएसआई था, हो सकता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस रिमेन्स इन न्यूज, दिस हैज बीन इन न्यूज एज वेल। सो डीसीजीआई के ऊपर भी आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। Then in 2023 question came again, which of these are constitutional bodies? तो आपको 4 बॉडीज का नाम दे दिया गया और पूछा जा रहा है कि बता दो इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा है। सिंपल, फ्यूचर में आपको बॉडीज का नाम दे दिया जाएगा और अब हो सकता है मैच दी फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन दे दिया जाए, 4 बॉडीज का नाम, और पूछा जाए कि बताओ इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, कौन सी स्टैट्यूटरी है, कौन सी एडवाइजरी है। पूछ दिया जाएगा हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्टली मैच्ड। इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन कम। 2024, 2 years ago, Northeastern Council, नॉर्थ ईस्ट रिमेन्स इन न्यूज, उसके ऊपर क्वेश्चन आया, एंड दिस क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है एक्ट का भी नाम, दैट मीन्स इट इज ए स्टैट्यूटरी एक्ट। बट टेस्ट क्या हो रहा है, मेंबर कौन कौन से लोग हैं, इनमें से कौन कौन से लोग मेंबर हैं। तो कोई सी बॉडी आप पढ़ें तो उसका सोर्स तो देखना ही है। मैंने हमेशा बोला, मैंने शुरू में बोला, सोर्स वेदर इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, वेदर इट इज स्टैट्यूटरी, वेदर इट इज एग्जीक्यूटिव, और उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशनल है तो कौन सा आर्टिकल, स्टैट्यूटरी है तो कौन सा एक्ट, एग्जीक्यूटिव है तो कौन सा रिजोल्यूशन, एंड ऑल्सो ईयर, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन आफ्टर द सोर्स इंपॉर्टेंट थिंग इज पावर, what kind of basic powers it is having, then composition, what is the basic composition, who is the chairman, how many members, who appoints, who removes, this type of things you should be aware of. So composition of northeastern council के ऊपर क्वेश्चन आया, so this becomes important, आप इन्हीं के ऊपर अच्छे से काम कर लीजिए। In future there can be questions regarding zonal councils, interstate councils, who is the chairperson, who are the members. Why I am doing all this? So that you should understand कि PYQs को analyze कैसे करना है, आप रास्ते से भटके नहीं। What is happening now, like people are solving, people are purchasing heavy books जिसे 30 साल 25 साल के PYQs दिए हुए हैं, but they are reading the PYQs and their answers, they are not analyzing. So the purpose of this series trace is like you should learn what are the insights you should be having from the PYQs, what could be the future questions on that topic, what could be the answer, the explanation, and above all the MCQs, probable MCQs for future. Last year question came again, which of these established as per the provisions of constitutional body, constitution. तो आपने देखा
देर आर सेवरल क्वेश्चन, 3 or 4 क्वेश्चंस दैट आर डायरेक्टली आस्किंग कि बता दो इसमें से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सा है. सो लाइक फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं. और एज आई सेड अ व्हाइल अगो कि आर्टिकल्स, एक्ट्स, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशंस, इनके ऊपर आपको काम करना चाहिए. डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉडीज जो भी हैं, पर्टिकुलरली विच आर coming in current affairs, those become very important for you. So this way we finish up this fifth episode. A fifth episode tha of the subject Indian polity and governance. Total 5 episodes. The first episode was basics of Indian constitution and polity. In that we analyzed nearly 57 questions, जिसमें structure, schedules, इन सब हमने discuss करा. Indian polity and its people, citizenship, fundamental rights, DPSP, fundamental duties, 40 questions we discussed in second episode. Third episode was like a state government, union government, local government, judiciary, and we discussed, I guess, 45 questions in third episode. 49 questions in fourth episode, having legislative bodies, Lok Sabha, Rajya Sabha, unke powers, authorities, speakers, chairpersons, chairman. And today's episode, the fifth episode regarding commissions and other offices, had 20 questions. तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 211 क्वेश्चंस. 211 questions related to Indian polity and governance from past 15 years. इससे ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में नहीं आया है. अगर आपके हिसाब से कोई आया है तो आई विल पुटिंग दैट क्वेश्चन इन सम डिफरेंट सब्जेक्ट. बट टिल नाउ आई हैव एनालाइज्ड ऑल दी 15 years PYQs and 211 क्वेश्चन है फ्रॉम इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, एंड all those questions have been segregated across different themes of relevance, and those themes have been analyzed for your clarity and excellence, so that you learn the art of analyzing the PYQs. You learn it, and based on those learnings you understand कि okay future में किस type of questions frame हो सकते हैं. If you actually do this way, and based on those prospects, if you are solving the MCQs like which have been given in this book which you can buy, अगर आप ये सब कर लेते हैं, then this prelims becomes very easy and doable for you.